Hello, everyone. A very good evening to all. I hope I'm clearly visible, properly audible to everyone. Let me check कितने लोगों ने join किया है. So let's wait for everybody to join. In the meantime, I can see few people have joined already. Can you guys give me the confirmation? Am I properly audible or not? आवाज आ रही है मेरी clearly? सभी को जो लोग अभी live हैं. If you guys can give me the confirmation, then that would be great for me. Let's wait for everybody to join. Many people have joined now. Yeah, clear. Thank you so much. Thanks a lot for the confirmation. So, how is everyone doing? Hello. Hi, Abhishek. Okay, I'm still waiting for few more people to join because I'm expecting a lot many. Hello. Hi, Varun. Doing good. How are you, ma'am? I'm also doing great. Thank you so much for asking, Kilaswi. Perfect. Many people have joined. Super. So, first of all, a very happy Teachers' Day to everyone. Why you guys? Because obviously, uh, बहुत कुछ आप लोगों से भी सीखने को मुझे मिलता है. So whenever I used to teach in the classes, in the sessions, in the YouTube live, wherever, in whatever platform, तो एज अ लर्नर जैसे आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो राइट बहुत सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करने को मिलती हैं एंड दैट्स हाउ आई एम एज अ पर्सन ग्रोइंग एवरी ईयर so thank you so much for that, right? And many people have sent a lot of good wishes to me. They have pinged me on LinkedIn, Instagram. So thank you so much. Maybe personally मैंने सबको thank you नहीं बोला होगा. तो publicly on this platform, I really want to say thank you to everyone, to each and every learner. Uh, जो भी कभी भी कुछ भी अगर आप लोगों को सीखने को मिला इस यूट्यूब चैनल से या फिर मेरे किसी भी कोर्स से राइट बीट एनी प्लेटफॉर्म कहीं पे भी सो अ लॉट ऑफ थैंक्स टू एवरीवन इन दैट स्पेसिफिक पार्ट राइट happy teachers day to each and everyone over here. You guys are also teachers for me because I'm learning a lot of things from you guys, so thanks a lot for that. um Perfect. I think many people have already joined. तो एक काम करते हैं सेशन शुरू करते हैं एंड इन द मीन टाइम आई थिंक और लोग भी ज्वाइन कर लेंगे हमें तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड you guys just need to give me the confirmation is my screen will be visible or not. Just give me a moment. Perfect. Screen दिख रहा है सभी को? Can I get a quick confirmation from everyone? Is my screen is properly visible? Can I get a quick confirmation from everyone over here? So that we can proceed with our today's discussion. Yes. So, you know, इस सेशन का आइडिया कैसे आया? सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू दैट पार्ट और फिर हम स्टार्ट करेंगे. सो होता ही है कि हर हफ्ते सैटरडे संडे को ऑन एवरी वीकेंड आई यूज टू टेक द सेशंस. आई यूज टू टीच मल्टीपल स्टूडेंट्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स. बहुत लोगों को पता भी होगा
बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज कुछ मेरे प्लेटफॉर्म पे, कुछ कोलेब्रेशंस के साथ में मेरे अभी चल रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग मुझे इनवाइट करते हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू होस्ट द इवेंट। तो ऐसा ही हर हफ्ते होता है, हर ऑलमोस्ट संडे को आई यूज टू डू वर्चुअली फ्यू सेशंस। आई इंटरेक्ट विद द लर्नर्स लाइक यू। और एक कॉमन क्वेरी जो एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर मुझे हर हफ्ते सुनने को मिलता है कि प्रिया, वी आर अ फ्रेशर्स, वी डोंट हैव एज सच real time projects with us, but companies are expecting great projects. Companies are expecting from us maybe some sort of experience. तो हम एज ए फ्रेशर उस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं। एंड आई ऑलवेज से टू देम कि ना, बहुत सारे रेपोजिटरीज है, जैसे यूसीआई रेपोजिटरी है, कैगल प्लेटफॉर्म है, आप वहां जाओ, एक्सप्लोर करो, आपको समझ में आएगा। सो दे विल बी लाइक कि ठीक है प्लेटफॉर्म्स है, बट उसको यूज कैसे करना है, राइट? हाउ कैन वी यूज देम एज अ बिगिनर टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट? अब उसके लिए आई ऑलवेज थिंक कि इट रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड सेशन, एंड आई हैव टेकन दिस सेशन 2 years बैक। तो अगर आप ये वाली वीडियो देखो मेरी, आई विल शेयर दिस वीडियो लिंक ऑल्सो इन द चैट। सो इन दिस वीडियो ऑफ माइन, इट्स अवेलेबल इन द डेटा साइंस प्लेलिस्ट। मैंने ये 2 साल पहले ये वीडियो कवर अप करी थी। आज एक्चुअली मैं आई वॉज जस्ट लुकिंग ऑन टू दिस स्पेसिफिक वीडियो। सो मैंने ये टॉपिक कवर किया हुआ है कि कैसे आप कैगल प्लेटफॉर्म पे जाके किस तरीके से चीजें कर सकते हो। I have covered it in a lot more depth, but maybe many new people, many new beginners have joined later on this specific channel, or they have joined my sessions later on. तो उनको आइडिया नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट टू एवरीवन कि आप लोग इस वीडियो को जाके एक बार एंड टू एंड दोबारा देखना, एटलीस्ट फॉर दोज हु आर लुकिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट टाइम दिस स्पेसिफिक वीडियो। दिस इज अवेलेबल इन द डेटा साइंस प्लेलिस्ट। आई एम अगेन स्पीकिंग। उसके बाद कुछ नई चीजें, क्योंकि हर साल प्लेटफॉर्म्स में कुछ अपडेट्स आते हैं, और कुछ चीजें जो मैंने यहां पर कवर अप नहीं की हुई, आई रियली वांट टू कवर अप ओवर दिस स्पेसिफिक लाइव डिस्कशन, ठीक है। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव कि हाउ वी कैन मेक अ यूज ऑफ दिस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म to create wonderful projects, to highlight our experience in the resume, so that our chances of getting shortlisted would be enhanced as a fresher. That's the whole idea of today's discussion. I hope the objective is pretty much clear. And I really hope that many of you guys are facing this trouble right now. Because क्योंकि मैं हर हफ्ते लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, मुझे ये सुनने को मिलता है कि नहीं समझ में आ रहा कि कैगल पे जाके भी हम कैसे डेटा सेट्स पे काम करें, किन चीजों पे फोकस करें, किन चीजों पे ना करें, क्योंकि कैगल में भी अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो कहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, और फिर कैसे हमें उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करना चाहिए। सो दैट्स द होल आइडिया which I am sharing with you today. First of all, for those people who are not really aware about this platform of Kaggle, तो अगर आप इसको सर्च करोगे just by clicking on kaggle.com, you will find it is a largest AI and ML community. ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, ज्वाइन ओवर 25 million plus machine learners to share, stress test and stay up to date on all the latest ML techniques and technologies. सो आपको यहाँ पे लर्नर्स भी मिलेंगे जो लोग सीख रहे हैं अभी इस फील्ड को, डेवलपर्स भी मिलेंगे जिनके पास ऑलरेडी काफी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे ऑलरेडी आर वर्किंग ऑन दिस स्पेसिफिक फील्ड, और काफी रिसर्चर्स भी मिलेंगे जो कि स्पेसिफिकली इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, डेटा साइंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, एनएलपी के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर. So you will find almost all the flavors, all the varieties of people on this specific one platform. And that's the beauty about this platform. To be very frank, I didn't get much time from past few years. मतलब जब से मैंने अपना मास्टर्स फिनिश किया back in 2022. To be very frank, I didn't get the time to work further on this platform. So because of multiple commitments, maybe if my weekends will be free in future again, if I stop teaching and I have a time for myself, I definitely try and spend maximum time on this platform. As a beginner, if you have a time, or even as a working professional, if you have a time on weekends, please do try to invest over here. Now I will talk about few interesting things on this platform which you might like it and which will be really helpful for you. First of all, if you don't have any registration
done till so far and you're new to this platform, you have to first of all register with your personal email ID, whatever be the email ID you have. With the help of that, first of all, sign up. Proper registration is required, and then you have to sign in with the proper credentials. Once you do that, you will find over here that we will be having 528K high quality public data set. जब कैगल कुछ साल पहले मैंने पहली बार देखा था, तो उस टाइम पे डेटा सेट्स जो अवेलेबल थे वो काफी कम थे. And Kaggle was initially designed to, have that public data set available with us. But अब Kaggle ने बहुत ज़्यादा अपने आप को, advance कर लिया है in terms of having their own code files, kernels, GPU access. मतलब कि अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप भी नहीं है, then also you can do everything, starting from accessing data to writing the code from scratch and deploying it. Everything you can do over here in this platform. That's the beauty about this platform. So everything from avocado prices to video game sales, everything will be available in this specific data. Now I hope everybody knows that in the domain of data science we have different domains. जैसे healthcare एक domain हो गया. I think few days back only I have launched one video where I have talked about AI in healthcare. Have you guys watched that by any chance? देखा है आप लोगों ने? मैंने रिसेंटली ही एक वीडियो आई थिंक 2-3 दिन पहले शायद शेयर किया था. किया तो था, यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा? हाँ, ये रहा ना, फर्स्ट वीडियो, हाउ एआई एंड डेटा साइंस आर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर, राइट? I have checked, I hope you have seen that. So in this specific part, if you will observe what we are saying, we have different sort of, I would say, domains available. Healthcare hai, security hai, fintech hai, banking hai. There are different domains available over here. Now depending upon what sort of domain you are working with, your data set will definitely vary. So techniques might differ, but definitely you will find each and every domain of data available over here. That's the very first beauty about this specific platform. I hope it is clear to everyone. Is this clear? All good? Can I get a quick confirmation from everyone? Yes or no? कुछ perfect. Now, here you will be able to observe. Let me go back and let me sign in with my platform. I hope this screen is also visible to everyone. Is this visible? So I'm again saying it's being, so the good thing in my master's is that whatever be the task which I got in my master's curriculum, everything I was getting in the Kaggle platform. So this Kaggle platform is also designed to host competitions, to discuss about different challenges. And in the IITH, maximum tasks which we got from machine learning side, everything was there in the Kaggle itself. I will talk about those things as well. Now, here you will find there is a home page. So this is the home page that we have. Then we have a competitions, data sets, models, and many more stuffs are there. We'll go one by one. The very first important thing I want to come across is data set. This is the very important and interesting tab. For example, let's say you want to work on data analytics task. You want to become data analyst. Okay? Your target as a fresher is to become data analyst. Now, many people say that how can we get the data? How can we create the projects? Can you see the very first thing is Uber data analytics dashboard. So if you will go inside this, you will find the end-to-end data for this. Complete description is there. This is a comprehensive data set, detailed ride-sharing data from Uber operations for the year 2024, providing rich insights into booking patterns, vehicle performance, revenue streams, cancellation behavior, customer satisfaction metrics. Everything is available in this data.
You can see how many number of records are there and what are the key statistics of each and every record. Now, it's all your wish whether you want to work on this entire data in your own local system. So basically, you have to create a proper dashboard for this. Now, obviously, you have to create over here the statistics, the Power BI tool over here, so the SQL commands. So whatever the skill set you have, you can see that how beautifully the dashboard is being created, right? And when we click on overall, it is giving you overall insights. When we're clicking on getting the vehicle type, revenue, cancellation, ratings, accordingly different sort of screens are coming up. Tell me how difficult it is to get the idea from here. If anybody will be able to design this sort of project and write in the resume, why company won't hire you? Why company won't reach out to you? Why you won't be able to crack the interviews? Tell me. So not really sure that why is this gap coming up. आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मे बी शायद इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे नहीं पता, बट आप इस प्लेटफॉर्म को फोकस करके भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स एज अ बिगिनर बना सकते हो. सबसे पहली बात हुई डेटा सेट की. इफ यू हैव यू इन योर लोकल दैट फ्लेक्सिबिलिटी, you can download this data, do step by step every work, create interesting project dashboard. Your focus will be on data analyst side. Now, one thing is this. Second thing is, let's say you don't have a good laptop. So now you can see here we have an option of creating a new notebook. You can click on this button and it's giving you the complete kernel to write a code. So complete platform you're getting. If let's say you don't have a good system available with you, so you can do everything on this specific part. All the EDA steps on Uber data you can do over here. Calculate the complete stats for the same, get the analysis done, and once everything is done, you can download the file. You have a button to link to GitHub, you have a button to download the notebook, link to Collab. Everything is very smooth, very seamless. So if you feel that you don't have that much RAM in your system, or your system hangs a lot, you can do everything in the cloud, in the Collab, in the this Kaggle version itself. And once you're done, you can save and publish this as well. You can share this to publicly so that anyone can view that. You can simply click on this specific button, and you can just share in your resume as well that this is the project that you have created. I hope it is clear to everyone. So whatever code we usually write, so you can see here automatically data is available, dashboard.gif, CSV file is there. For example, if I'll just run this code, let me just give you one simple example. So if you want to read this data, how you write the query? Same query you have to write. So you will say read underscore CSV, and inside this you will write the path. Once this is done, you will say data frame dot head. Once this is done, you will obviously have to wait some time. And after that, the details should be visible to us. There is some issue? No, it is there. So you can see details are there. Date is there, time is there, booking ID is there, status is there, customer ID is there, everything is available. So basically, whatever the EDA task you were doing on your own Jupyter notebook, on your own Google Colab, you can do everything over here. And after that, you can save it, you can publicly share it with everyone. This is the one thing. So what we have learned so far? First thing we have learned that how we can take any data specifically to the purpose of data analysis or be data science. I'll showcase you data science based projects as well. Once we can access that, either we can download the data manually and we can do everything in our local system, or we can create a file in the Kaggle itself. Here everything is available. You can directly start writing a code. Everything is already installed. In fact, if you will go inside the session options, you can see if you want to access GPUs, you can go ahead and do that.
In the language, we have one flexibility. Either you want to go with Python or R, you can change that. What is the environment you want? You can check that as well. Schedule a notebook to run. You can trigger. For example, sometimes we think that it's a streamlined data which requires an update. So you can say that, hey, you can just data updates once daily. Automatically, your file will get run and you will get the updated result every day. So all the flexibilities were there. It was not there previously. Now this tool has enhanced a lot. So please take advantage of this tool fully. The second important thing is, which I always appreciate, one thing is कि हम खुद कोड लिख रहे हैं, right? दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि हम दूसरे के कोड को भी समझ के बहुत कुछ सीखते हैं. So if you will go inside this code section, you will find the code of multiple people. For example, updated 3 days ago. If you will open this, you will find कि बाकी लोगों ने क्या किया है, how they have done the EDA, कैसे कैसे काम किया है, कितनी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी. You can check, everything is available. One by one, whoever is the person, you can see what are the things he or she has done in doing the EDA task, in doing the data pre-processing task. Maybe there are some strategies which you're not even aware of while doing a EDA, which you have never ever learned, and you might find here or here, and you will start exploring that further. You can see further comments are there. You can also comment over here. For example, here someone have mentioned great work, Naman, great pre-processed data, good pre-processing. If you have any doubt, you can comment over here. The other person who has done this task, they might help you out. They can, see your comments. They can respond to you. They can upvote you. So it's kind of building a great community of like-minded people. And by the way, this is not something which is in India. Globally, you can interact with everyone. Whosoever is interested in this specific domain. That's the beauty about this platform. Kaggle people won't reach out to me to sponsor this video. I am doing it because when I was the learner, when I was very new in this specific field, I was using this platform quite heavily because my reason was very simple. I got, as I mentioned you, IITH tasks on this specific platform itself. So they used to host the competitions over here. That's where I started exploring this platform. But today I'm sharing you these things क्योंकि अगर आपके कॉलेज वाले ऐसा नहीं कर रहे तो आपको खुद को एफर्ट लेना पड़ेगा, राइट? सो फ्रेशर्स के लिए देखो, जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं करने को, कंपनी स्पेसिफिक. तो वो इंटरव्यूज में जाके वो सब बताएंगे. बट आप लोग क्या बताओगे? आप लोगों के पास भी तो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. उसके लिए दिस इज द प्लेटफॉर्म व्हिच इज बीइंग डिजाइन. After that, we have a further interesting option of discussions. General discussions, getting started. So basically आप यहाँ पे जाके लोगों से डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो. ओन्ड बुकमार्क्स, अगर कोई ऐसा डिस्कशन है जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है, आपको काफी मजा आ रहा है, उसमें कुछ नई चीजें सीखने को मिल रहा है, बुकमार्क कर सकते हो उसको. फर्दर अब एक और बात करती हूँ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है एज अ फ्रेशर, दैट इज अबाउट कॉम्पिटिशंस. देखो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशंस होते हैं. बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि हैकाथॉन की फॉर्म में कॉम्पिटिशंस को होस्ट भी करते हैं. हो सकता है कि उनकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक अच्छा सोल्यूशन डिजाइन नहीं कर पा रहे और उनको आउट ऑफ द वे जाके कुछ अच्छा सोल्यूशन डिजाइन करना है. तो वो क्या करते हैं, वो कैगल पे आके हैकाथॉन की फॉर्म में एक अच्छा प्राइस लॉन्च करते हैं. फॉर एग्जांपल, यू कैन सी द प्राइसिंग ओवर हियर. 4 days टू गो, 2 months टू गो, 1 month टू गो. एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप कुछ अच्छा एंड टू एंड सोल्यूशन बना के दो उस कंपनी को, एंड दे विल गिव यू द मनी फॉर दैट. सो इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी जहां पे आप अच्छा अर्न भी कर रहे हो और साथ साथ आपकी पोजीशंस भी यहाँ पे एनहांस हो रही हैं. दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन मेंशन इन योर रेज्यूमे, व्हिच इज अ ग्रेट, आई वुड से, highlight in your resume, which differs you from other people. I hope especially freshers are getting my point, what I'm trying to convey over here. यहाँ पे कुछ rankings भी होती हैं. You can go ahead and explore this inside the more section. Kaggle rankings, code rankings, grandmasters. So you can see these are the people who have done really great.
So Abhishek Thakur, he's the one whom I remembered I followed as a fresher. At that point of time, he used to post a lot of videos about Kaggle, and from there I got the inspiration, and I started getting interaction with this specific platform quite frequently at that point of time. उसके बाद मुझे जॉब के बाद में इतना टाइम नहीं लगा, बट उस टाइम पे यू कैन ऑल्सो सर्च हिज चैनल. आई थिंक अभी भी चैनल तो होगा. आई एम नॉट रियली श्योर वेदर ही इज एक्टिव ऑन हिज चैनल और नॉट, बट आई रिमेंबर आई यूज टू फॉलो हिम. यू कैन गो अहेड एक्सप्लोर हिज चैनल. वीडियोस पुरानी रखी हुई होंगी उनके पास जो मैं बता रही हूँ. आई रिमेंबर उन्होंने 100 days of ML करके कैगल में बनाया भी था, जिसको मैंने फ्रीक्वेंटली फॉलो किया था उस टाइम पे. सो anyone can host a competition, for example any company, and that is where college also used to host the competitions. तो कॉलेज में भी वो लोग, जैसा मैंने बोला, IITH के अंदर क्या होता था कि वो अपना जितना भी कॉम्पिटिशन होते थे हमारे ML के, वो सारे कैगल पे रखते थे. सो एवरीवन कैन सी व्हाट इज द रियल टाइम लीडर बोर्ड लुकिंग लाइक, कौन टॉप रैंक पे है, कौन नीचे जा रहा है, एजुकेटेड रिसोर्सेज. In fact, I remember there was a courses section also available over here. आई थिंक लर्न में होगा. सो यू कैन सी कोर्सेज भी हैं. इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, इंटरमीडिएट मशीन लर्निंग, फीचर इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, पाइथन, पांडास, डेटा विजुअलाइजेशन, SQL, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, टाइम सीरीज, डेटा क्लीनिंग, AI एथिक्स, ML एक्सप्लेनेबिलिटी, गेमिंग AI रीइंफोर्समेंट लर्निंग. बताओ आपको क्या चाहिए. और अगर आपने एज अ फ्रेशर इतना कुछ पढ़ लिया और उसको इंप्लीमेंट कर लिया, मुझे बताओ उसके बाद क्या आप लोगों के लिए इंटरव्यूज क्रैक करना मुश्किल होगा? क्या आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा कि क्या लिखें रिज्यूमे में? विल दैट बी डिफिकल्ट फर्दर once you will be able to do that? And you guys have a time. I don't know why you guys are not spending it over here. और ये टाइम अभी ही मिलेगा, बाद में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आई डोंट नो हाउ मच बिजी यू विल बी इन नियर फ्यूचर. So please work on this specific platform. I have showcased you. जैसा मैंने बोला, मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उसको भी एक बार रेफर करना, जहां पे I have explained you in a lot more detail about this specific platform and how can we use it, right? So this is the overall idea. I hope this gives you an insight. एक और चीज regarding the data sets, एक बात करी मैंने डेटा एनालिस्ट के लिए, राइट? अगर मान लो आपको डेटा साइंस के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, सो इन दैट केस यू आल्सो हैव अ प्रोजेक्ट, राइट? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट स्ट्रेस मॉनिटरिंग डेटा सेट. सो इट्स लाइक अ हेल्थ केयर डोमेन. यू कैन गो इनसाइड दैट इफ यू वांट टू वर्क. अगेन सेम चीज, अगर आपको लोकली करना है तो डाउनलोड कर लो. अगर आपको लोकली नहीं करना, आपको लग रहा है कि आपके पास इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, तो इसको यहीं पे ही कर लो. यू कैन जस्ट अगेन क्लिक ओवर हियर, click on this new notebook. You can launch that and start working over here. See how people are writing the code. Always check that. Once you will write your own code, always check what others are doing. Right? I hope it actually gives you the insight कि हमें कैसे काम करना है. Right? How to find problems related to data set. When you start working on it, जब आप इसको start करोगे करना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप करोगे तो समझ में आएगा कि कहां पे आप लैग कर रहे हो, कहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ आप यहां पे काम नहीं कर रहे, आपके साथ बहुत सारे आपके फ्रेंड्स काम कर रहे होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो व्हेन यू स्टार्ट चेकिंग देयर कोड एज वेल, यू विल सी द गैप. मतलब मेरे को कितना आता है, मैं कितना कर पा रहा हूं, और बाकी लोग कितना कर रहे हैं, और वहीं से आपका एक्चुअल में लर्निंग फेज स्टार्ट होगा. एज अ फ्रेशर आप इतना ही कर सकते हो. उसके बाद आप जब कंपनीज में एंटर करोगे तो ऑब्वियसली आप एक अलग फुल फ्लेश डेटा के साथ काम करोगे. यू विल हैव दैट एनवायरमेंट, यू विल हैव दैट काइंड ऑफ डेटा सेट. बट अभी के लिए जो भी आपके पास पब्लिकली अवेलेबल डेटा है और जो भी आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपका हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है, तो हेल्थ केयर वाली प्रॉब्लम्स को उठाओ. अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग डोमेन में है, बैंकिंग वाली प्रॉब्लम्स को उठाओ, और आपको हर एक डोमेन का डेटा सेट यहाँ पे मिल जाएगा. अब ये प्लेटफॉर्म इतना मेच्योर हो गया है कि आपको हर एक डोमेन का डेटा सेट मिल जाएगा. यू जस्ट हैव टू सर्च ओवर हियर, सर्च ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल मुझे
ब्रेस्ट कैंसर बेस्ड डेटा चाहिए, उस पर मुझे काम करना है। यू कैन सी कितने सारे ऑप्शंस मेरे पास आए हुए हैं। मुझे हार्ट रेट बेस्ड डेटा पे काम करना है। यू विल सी, ये तो हो गया हेल्थ केयर का। लेट्स से कि मुझे किसी बैंकिंग डोमेन के डेटा पे काम करना है। बैंकिंग डेटा सेट, मार्केटिंग टारगेट्स, बैंकिंग कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन। जस्ट यू हैव टू सर्च, यू विल फाइंड आपके डोमेन के हिसाब से उसका कॉरस्पॉन्डिंग डेटा। यू हैव टू गो इनसाइड दैट, explore that data, see the code of others, do at your end, and try to build end-to-end projects for the same. End-to-end का मतलब है कि आप पूरी पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हो, उसकी डेटा इंजेक्शन देख रहे हो, उसके बाद डेटा को कैसे फेच किया जा रहा है, पूरा की पूरा पाइपलाइन दिखा रहे हो। उसके बाद आप ईडीए का इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो प्रॉपरली कर रहे हो। उसके बाद आप मशीन लर्निंग का मॉडल प्रॉपरली अप्लाई कर रहे हो, फिर उसे इवेल्युएट प्रॉपरली कर रहे हो, और फिर हो सके तो उसे डिप्लॉय भी कर रहे हो। ये होता है एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट। अगर आप एज अ फ्रेशर ऐसा कर रहे हो एक अच्छे डेटा के साथ में, सो ऑब्वियसली कंपनीज विल स्टार्ट रीचिंग आउट टू यू। You have a different level of confidence and expertise in that case, right? I hope it is clear now. So this is the thing which I really want to cover up in this specific live discussion. अगर आपके पास कुछ questions है तो you can start taking up one by one. I will pick one by one. एक और चीज, for all those people uh, who are not really aware, I have launched one workshop जो कि बहुत जल्दी next Monday को start होने वाली है. Learn and build hands on generative AI. If you will go inside that, you will see it will start from 8th of September. It will end by 12th of September. Classes will be on Monday, Wednesday, and Friday from 9 to 11:30 p.m. IST. And you can see the end-to-end detail of this specific course. In fact, अगर आप इस पेज पे जाओगे तो आपको YouTube वीडियो का लिंक भी दिखेगा. You can go and check this video. Everything, every detail will be there. So if you are interested, please go ahead without any due, because Monday को ही हम start कर रहे हैं. और उसके बाद next इसका टू रोट आएगा या नहीं आएगा, नॉट रियली श्योर. अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है अभी के लिए. दिस इज द थिंग विच वी आर coming up very soon in the upcoming week on the platform of Tech for All with Priya. So if you're highly interested, please go ahead, check this out. I'm very excited to start this part. Also एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है उन लोगों के लिए जो लोग एनरोल हो चुके हैं. So if there are people who have already enrolled into this course and is live in my today's discussion, आप लोग प्लीज जाके अपने डैशबोर्ड में चेक करना. आपको एक डॉक्यूमेंट दिखेगा वेलकम करके, वेलकम टू दिस वर्कशॉप. उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, और उसमें एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी होगा. अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया. आई हैव चेक. सो इफ यू आर समवन हु हैज ऑलरेडी एनरोल्ड इनटू द कोर्स, एक बार चेक करना. और आपके पास एक फॉर्मल मेल भी आया होगा, कल ही गया होगा शायद. एक बार अपना ईमेल भी ज्यादा चेक करना, जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया होगा या एनरोल किया होगा. तो आपके पास मेल में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आया होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करनी होगी, सो वी आर कनेक्टेड ओवर हियर. आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. आई कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद यू गाइज, एंड आई रियली वांट वन टू वन कनेक्शन. मेरे हर एक कोर्स का अलग टेलीग्राम ग्रुप है. So please go ahead, join that. I'm looking forward to meet you all live on that discussion on Monday. Perfect. Let me now do one thing. Let me first of all stop sharing my screen and let me pick few questions now. How we will frame what kind of questions we can answer from the given data set. आपको जब आप Kaggle पे जाओगे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिखा हुआ होगा डेटा सेट्स के अलावा, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कस्टमर चर्न प्रोडिक्शन का डेटा लेते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी. उसमें प्रॉब्लम होगी कि कस्टमर चर्न करेगा कि नहीं करेगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट. सो इट्स काइंड ऑफ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम.
तो प्रॉब्लम डेटा के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अब उसके अंदर आपसे इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपने ईडीए में कौन सी टेक्निक्स लगाई, फीचर इंजीनियरिंग के अंदर क्या चैलेंजेस आपको आए, आपके डेटा का साइज कितना था, कितने कॉलम्स थे, क्या वो कॉलम सभी इंपॉर्टेंट थे, क्या आपने कोई फीचर सिलेक्शन टेक्निक वहां पे लगाई थी, अगर डायमेंशन ज्यादा थे तो आपने रिड्यूस कैसे किया, क्या आपने पीसी टेक्निक लगाई थी, पीसी का इंटरनल क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस वहां पे आपसे पूछ जाएंगे। फिर आपने कौन सा मॉडल इवेल्युएट किया, वही मॉडल क्यों चूज किया। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो मैंने एक्जीबूस्ट लगाया, क्यों लगाया और कोई क्यों नहीं लगाया। तो आपके पास उन सब क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए इन अ लॉट मोर डिटेल्ड मैनर। वो कब समझ में आएगा, वो तब समझ में आएगा जब आपको मैथ्स पता होगा एल्गोरिथम्स का। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड ओवर हियर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। टैब्ल्यू का तो मुझे आइडिया नहीं है, टू बी वेरी फ्रेंक। मुझे पावर बीआई का आइडिया है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर और लेस दोनों सेम ही काम करते हैं और सेम ही वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो अगर आप टैब्ल्यू को यूज कर रहे हो तो आपको उसके फीचर्स, कैसे वहां पर हम ईडी के टास्क परफॉर्म करते हैं, कैसे हम डैशबोर्ड्स को क्रिएट करते हैं, क्या क्या चीजें हम रिपोर्टिंग के टाइम पे यूज करते हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जैसे पावर बीआई में होते हैं, स्लाइसिंग ऑपरेशन हो गया, फिल्टरिंग ऑपरेशन हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से ग्राफ्स अवेलेबल हैं, किस टाइम पे कौन सा ग्राफ हमें यूज करना चाहिए रिपोर्टिंग के टाइम पे या डैशबोर्डिंग के टाइम पे। वही सब चीजें मुझे लगता है टैबुलो में भी होंगी, बट अगेन आई एम सेइंग टैबुलो मैंने पर्सनली कभी यूज नहीं किया अभी तक। ठीक है, परफेक्ट। कैन यू टेल हाउ टू रीड डेटा साइंस रिसर्च पेपर। शुभम, इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बट इफ यू वांट वन लाइव फॉर दिस वी कैन डू दैट मे बी इन द अपकमिंग डेज। बट लेट मी जस्ट शेयर विद यू, अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डेटा साइंस प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग द रिसर्च पेपर्स एज वेल। मैं खुद एक बार देख रही हूँ क्योंकि बहुत सारी वीडियोज अब तक क्रिएट कर चुकी हूँ मैं, तो मुझे भी कई बार याद नहीं रहता। बट लेट मी जस्ट चेक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Yes, I find that video. So this is the video. I think this will help you. Let me just share with you in the chat. You can check. I hope that will be helpful. How we will frame the questions from a given dataset in data analysis projects using MS Excellent SQL. इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपरली एक प्रॉम्प्ट में डिजाइन करो और जीपीटी से पूछो कि मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इसमें मैंने ये टूल्स यूज किए हैं इस प्रोजेक्ट को एंड टू एंड क्रिएट करने के लिए। मुझे बताओ इंटरव्यूज के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस ये इसमें से आ सकते हैं। यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। यू कैन ऑल्सो आस्क फर्दर कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे होते एज अ टेक्निकल इंटरव्यू, आप क्या क्वेश्चन पूछते उनको ये बताओ। फिर वो आपको एक लिस्ट देगा और आप एज अ लर्नर कैसे उसे आंसर करते, कैसे उसे रेस्पॉन्ड करते, दैट ऑल्सो यू विल बी एबल टू गेट। देखो आज के टाइम पे आपका सबसे अच्छा टीचर पता है कौन है, ये एलएलएम बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। ये हमेशा हो सकता है सही इंफॉर्मेशन ना दे, बट मैक्सिमम टाइम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इन्हें जितना अच्छा टीचर बना सकते हो बनाओ, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछो आज के टाइम पे मैं कैसे एक्सप्लोर कर रही हूँ या रिसर्च कर रही हूँ अपने काम को लेके, सो फॉर मी माय फर्स्ट टीचर इज दीज प्लेटफॉर्म्स नाउ। things have changed, right? So accordingly we have to learn the patterns and obviously change our learning patterns and habits as well। क्योंकि देखो हर किसी के पास जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसकी डोमेन नॉलेज नहीं होगी, बट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो जितने डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, जितना विकीपीडिया पे कंटेंट अवेलेबल होगा उस पे फीड हुआ है। तो आप जब उससे डेटा लेके पूछोगे तो वो आपको एक बेस्ट आइडिया देगा। सो प्लीज गो अहेड एंड एक्सप्लोर दैट पार्ट। Domain knowledge is must in data analytics and data science field. It's very important, that's very true. But another thing is कि domain knowledge जो है वो experience से आती है। तो अगर आपके पास experience नहीं है
तो स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद लाइक माइंडेड पीपल, कॉन्फ्रेंसेज में जाओ, हैकेथॉन्स अटेंड करो, और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करो, वहीं से आपको वो स्किल सेट मिलेगा। और ऑब्वियसली डोमेन एक ऐसी चीज है जो आपको किसी कोर्स में समझाई नहीं जा सकती, वो आप जितने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे उसके साथ में आएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Can you give an idea of a project like full stack project for healthcare? What functionality I can make for that project, which I can put on resume and apply both ML and full stack roles? देखो, हेल्थ केयर के अंदर भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे आप मेरा खुद का रिसर्च पेपर चेक कर सकते हो कोविड का, मेरे लिंक्डइन पे आपको मिल जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ था कि वहां पे हमने CNN और नॉन CNN बेस्ड आर्किटेक्चर्स को कंपेयर किया था और उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करके दिखाई थी। ऐसे ही आपको कैंसर बेस्ड डेटा मिल जाएंगे। आप एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मॉडल क्रिएट करो जो कि कैंसरस सेल्स को इजीली डिटरमाइन कर रहा है विद द मैक्सिमम एक्यूरेसी। सो इफ यू कैन डिजाइन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, अब वो डिपेंड करता है कि डेटा आपका हेल्थ केयर का इमेज बेस्ड है, आप सीटी स्कैन या एक्सरेज पे काम कर रहे हो, या न्यूमेरिक है, उसके बेसिस पे आप या तो मशीन लर्निंग टेक्निक्स लगाओगे या डीप लर्निंग लगाओगे। हो सकता है दोनों वैरायटी के हो, तो उसमें आपका फुल स्टैक वाली चीज भी हो जाएगी कि कुछ चीजों में आप जो न्यूमेरिक है उसमें ML टेक्निक्स लगा रहे हो, और जो इमेजेस हैं उसमें आप DL टेक्निक्स लगा रहे हो। सो बोथ ऑफ देम combined together creates a great project for you. I hope it answers your question. राइट? आइडियाज बहुत सारे हैं। देखो, अब आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगेन आई एम सेइंग टू यू कि स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम LLM बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, दे विल बी द बेस्ट टीचर्स फॉर यू राइट नाउ। हम आपको या मैं आपको एज ए एक्सपीरियंस कुछ चीजें शेयर कर सकती हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है। मैंने जिस डोमेन्स में काम किया वो भी लिमिटेड है। बट अगेन, मशीन्स में जो डेटा फीड हुआ है वो जितना भी अवेलेबल है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो उस पर फीड हुआ है। तो यू कैन गेट अ बेस्ट आउट ऑफ इट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है? So again, I'm repeating, if there is anyone who is interested to enroll in generative AI workshop, please go ahead, join that. Very soon we will be starting our very first class on Monday. Very excited. And those who have already enrolled, we have already created a Telegram group. Please go ahead and join that. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके ईमेल पे आ चुका होगा, चेक करो एक बार। अदरवाइज आपको जो आपका डैशबोर्ड है उसके अंदर डॉक्यूमेंट होगा वेलकम करके, उसमें मिल जाएगा। आई रियली वांट टू मेक श्योर कि सब लोग एक ही जगह पे कनेक्टेड हो, सो दैट वी कैन बिल्ड अवर कम्युनिटी एज वेल। LLMs आंसर ओनली गिव ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट्स, ऐसा नहीं है। जिससे परप्लेक्सिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप वहां पे एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे तो आपको अच्छे आंसर्स भी मिलेंगे। यही तो हमें जनरेटिव एआई के वर्कशॉप में सीखना है कि अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखते कैसे हैं, कैसे अपने आंसर्स को निकलवाते हैं एक जीपीटी से या एक LLM बेस्ड टूल से, और कहाँ पर रैग और एजेंटिक एआई का भी वर्कफ्लो आता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ओनली वी विल हैव टू लर्न इन द अपकमिंग वर्कशॉप, राइट? Perfect. One last thing, we are in a era जहां पर AI बेस्ड टूल्स बहुत ज्यादा है और ये डोमेन भी काफी वास्ट है। अगर अभी भी आपको लगता है कि इन सब चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट क्वाइट बूमिंग, आज ट्रेंड चल रहा है कल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर यू विल स्टार्ट अपस्किलिंग योरसेल्फ। जितना हो सके अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो, अपने आप को अपस्किल करो इन डोमेन्स के अंदर, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। इट डजेंट मैटर आप किस डोमेन से बिलोंग कर रहे हो, आज के टाइम पे हर एक डोमेन वाले बंदे को मुझे लगता है कि इस स्पेसिफिक AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होनी चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर कि you will upskill yourself. It's a investment for you which will give you higher returns as comparable to whatever investment you made in FDs, mutual funds and XYZ other resources. सबसे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? खुद पे खर्चा करना, खुद को अपस्किल करने में खर्चा करना. So please don't hesitate to do that, right?
So with that, I think we can wrap up for today's discussion. एक और क्वेश्चन आया है अभी इंटरेस्टिंग. ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी एमटेक गेट प्रिपरेशन ऑफ योर्स, हाउ डू यू हैंडल एमएल स्टडी एंड गेट स्टडीज. देखो, जब मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो उस टाइम पे आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मशीन लर्निंग. और उस टाइम पे आई थिंक ये जो आई थिंक अभी हो गया है कि एमएल वाली चीज भी इंक्लूडेड है एआई में. देखो, गेट के अंदर एआई भी इंक्लूड हो गया, इसका मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. बट बैक इन 2019-20 में ऐसा नहीं था. गेट में जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स थे वही थे, मशीन लर्निंग का कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं था. For me, the preparation is I took a coaching offline from Made Easy Delhi. मुझे नहीं पता अभी भी वो अवेलेबल है कि नहीं, और क्या वैसे ही मेंटर्स अभी अवेलेबल है कि नहीं, बिकॉज इट्स बीइंग अ लॉट ऑफ ईयर्स नाउ. बहुत साल हो गए. बट उस टाइम पे मैंने फिजिकली कोचिंग लेके 1 साल प्रिपेयर किया था. पहले साल अटेम्प्ट दिया था बट रिजल्ट अच्छा नहीं आया था. आफ्टर दैट अगेन मैंने जॉब थेल्स में ज्वाइन किया था. साइड बाय साइड आई प्रिपेयर्ड एट माय होम. सेल्फ स्टडी किया था मैंने उसके बाद. तो इट टुक ऑलमोस्ट 2 years टू मी टू क्रैक. बट डेफिनेटली आई वुड से कि आज के टाइम पे गेट के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. तो मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भरोसे आपको अपना ड्रॉप लेते लेते जीवन निकालना चाहिए. बिकॉज नाउ अ डेज वी हैव अ लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज. यू कैन ट्राई, बट साइड बाय साइड ऑलवेज हैव योर बैकअप प्लान. कि अगर देखो, गेट में अच्छी चीज ये है कि अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपके फंडामेंटल्स काफी अच्छे क्लियर हो जाते हैं. और ऑब्वियसली यू विल गेट अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर मैं आज आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ तो मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया था. सो आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगी कि मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी साल निकालते हैं और फिर जब वो नहीं होता है तो काफी दुख होता है. तो ऐसा मत करो. एक बैकअप प्लान रखो अपने पास में कि अगर वो नहीं होगा तो मे बी आई विल गो विद दिस स्पेसिफिक जॉब और दैट स्पेसिफिक जॉब. बिकॉज नाउ डेज वी हैव लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज इन अवर लाइफ. इट्स जस्ट कि हमें देखने की जरूरत है और हमें उस चीज पे हार्डवर्क करने की जरूरत है. तो प्रिपेयर करो. मेरी जर्नी ये थी, मैंने आपको शेयर कर दी. और अगर मान लो मेरा सेकेंड ईयर में भी नहीं होता तो ऑब्वियसली आई विल गो अहेड एंड डू अ जॉब फर्दर. सो अपने माइंड को हमेशा प्रिपेयर रखना चाहिए, अच्छी चीज के लिए भी और नहीं होगा उसके लिए भी. एंड देन यू वोंट गेट डीमोटिवेटेड इन योर लाइफ. और हमेशा आप एक मतलब आगे की तरफ बढ़ते रहोगे, राइट. यू विल ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली एंड यू विल ऑलवेज मूव अहेड इन योर लाइफ. यू वोंट बी स्टक. यू वोंट फील लाइक कि मैं तो एक जगह स्टक हो गया हूं. सो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए. जो आ जाती है, please make sure you avoid that in your life. With that, happy Teachers Day to everyone once again. Thank you so much to be a part of this journey. I think आप लोगों के साथ ही टीचर्स लाइक मी विल प्रोग्रेस. अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ना ही तो ये कोर्सेज होते, ना ही मैं एग्जिस्ट करती, ना ही ये यूट्यूब चैनल होता. सो आई थिंक द इंस्पिरेशन, द रीजन ऑफ एवरी डे डूइंग अ हार्ड वर्क, learning, trying to do a self study is for me, at least you guys. क्यों मेरे को लगता है कि मुझे और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे आगे जाके पढ़ाना है. तो अगर मेरे ही कॉन्सेप्ट्स हिले हुए होंगे तो ऑब्वियसली व्हाट आई विल गिव टू द लर्नर्स हु आर वेटिंग फॉर मी. सो फॉर दैट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. रियली ग्रेटफुल फॉर यू ऑल फॉर दिस लाइफ, फॉर गॉड कि उन्होंने मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज यहाँ पर बैठ के आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ, इंटरेक्ट कर पा रही हूँ आप लोगों से. सो जस्ट ऑलवेज आई रियली वॉन्ट कि मैं इस तरीके से ही अपनी लाइफ में करती रहूं till the last end, right, of my life. Thank you so much once again. Thank you everyone. With that, I think we can end today's live. I will see you all again. आप कमेंट्स में बता भी सकते हो कि आपको नेक्स्ट लाइव किस टॉपिक पे चाहिए. कुछ अगर इंटरेस्टिंग आपके पास थॉट्स हैं शेयर करने को, यू कैन शेयर दैट. एंड विद दैट we can wrap up for today, right? Thank you so much. Bye bye. Good night. See ya.